Hello everyone, welcome back to another session by SSB Crack Exams. Myself Drishti Goyal, and in this particular session, we are going to discuss 12 ways to stay calm in SSB personal interview. So जैसा कि आप सभी को पता है कि personal interview is a very important part of your SSB और उसमें काम रहना उससे भी ज़्यादा important है, right? So आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे काम रहकर अपने इंटरव्यू के क्लियर होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. सो वेलकम टू SSB क्रैक एग्जाम्स. माई सेल्फ दृष्टि गोयल एंड नाउ वी विल प्रोसीड विद द एक्चुअल कंटेंट. सो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी से पहले आपको पता होना चाहिए 15 OLQs या फिर 15 क्वालिटीज के बारे में. आई होप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के बारे में, है ना, विच इंक्लूड मेनी क्वालिटीज लाइक योर effective intelligence, reasoning ability, your cooperation, your confidence, your power of expression, your courage, your stamina and everything, right? But here I am talking about one other quality which is not mentioned in those 15 officers like quality, but this can be proved to be a game changer for you. Okay, so that is nothing but calmness. Okay, so आप लोगों को काफी बार लगा होगा ऐसा कि some candidates got recommended out of blue, है ना, जिनका आपने कभी सोचा ना हो कि ये कैंडिडेट कभी रिकमेंड भी हो सकता है. उन्होंने ना ही ज्यादा कुछ परफॉर्म किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ उनका परफॉर्मेंस नहीं था, फिर भी दे गॉट रिकमेंडेड, है ना. एंड यू थिंकिंग कि यार ये कैसे हो गया, लाइक प्रोसीजर आई थिंक इज नॉट क्लियर और इज नॉट ट्रांसपेरेंट, किसी को भी रिकमेंड कर दे रहे हैं, ऐसे वाले बातें आती है फिर दिमाग में, राइट. So that is not because the candidate is not effective or is not very out of the box, okay, but he got recommended not only because of the performance but also for the behavioral pattern. Okay, so calmness, being humble, being patient definitely plays a very vital role in the recommendation. जितने भी लोग मैंने आज तक recommended होते देखे, right, one thing was mostly common between them, that they were calm in the SSB process. They were not very much tensed or stressed or not having different things in their mind at the time of performance. Okay, so calmness gives you chance to observe and understand. Okay, being patient and humble is one's natural ability. ओके, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही रूड है, अचानक से दे बिकम हम्बल, राइट, ऐसा कभी भी नहीं होगा. सो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड विद इन अ डे और अ मंथ, right, but definitely some things can be kept in mind that will help you master the skill of being calm and humble during your SSB process. Okay, so now without wasting any time, I'll directly move on to the important facts or the important points, that is 12 ways to stay calm in your SSB interview. Okay, so first one is be prepared. ठीक है, many times you must have heard कि SSB is a spontaneous process, जैसे आप हो बस वैसे ही प्रेजेंट करके आना है एंड आपका हो जाएगा, राइट. बट वो प्रेजेंट करने के लिए भी यू नीड टू प्रिपेयर. ओके, इट इज नथिंग लाइक आप जाओगे, आप बोलोगे और आप एज इट इज प्रेजेंट कर दोगे, नहीं होता वैसा. यू नीड टू प्रिपेयर. ओके, सो द बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस टू एनी कैंडिडेट appearing for an interview is do your research. You should be knowing in and out about the SSB process. Know about the type of questions that will be hurled up at you. When you have prepared well, you can talk well, interestingly and forcefully during an interview. Be prepared in every way. देखो, अगर आप prepared हो, डेफिनेटली ना कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप टेंस भी नहीं होगे और काम माइंड से यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स, राइट. देन प्लान. ओके, आपने प्रिपरेशन कर ली, बट बीइंग प्रिपेयर्ड आल्सो मींस टू प्लान व्हाटएवर यू कैन अहेड ऑफ टाइम. Don't keep the things for the last minute. Okay, be ready with all the things which need to be done. Okay, also whatever questions you know will definitely be coming up, have a basic mind mapping of those questions in your head. उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव अ ट्रैक ऑफ योर ओन लाइफ. जो भी आपने अपने लाइफ में किया है, नो मैटर गुड और बैड, ओके, यू शुड बी हैविंग अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ इट, कि जो भी आपने किया वो क्यों किया, जो आप कर पाए वो कैसे कर पाए, और जो नहीं हो पाया लाइफ में वो क्यों नहीं हो पाया. क्लियर. देन द फ्यूअर डिटेल्स यू हैव टू वरी अबाउट द डे ऑफ द इंटरव्यू द बेटर. डोंट वेट अंटिल द लास्ट मिनट. अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट थिंक कि जाने से पहले डिसाइड करूंगा कि क्या कपड़े पहनने हैं. ओके, जाने से पहले देख लिया जाएगा टाई पहननी है नहीं. डो नो,
Decide it beforehand and just be prepared at the right time. Okay. Next is rehearse. Like I was saying earlier, है ना, you have to represent yourself as you are, but for representing your own self you have to rehearse. Sometimes we say some things which actually don't belong to us, right? So that is why we need to rehearse and we need to practice what all need to be told and what need to not be told. Okay, so don't memorize the exact answers. Again, I'm not telling you कि रट्टा लगा के चले जाओ यार, no, but when you know certain questions like your strengths and weaknesses, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे कौन सी स्ट्रेंथ्स बतानी है, मुझे कौन सी वीकनेसेस बतानी है. Not necessarily in the right order, but at least it should be in your mind. Okay, then you are going to speak or talk about to convey your desirable message. Okay, practice makes prepared. So जो भी आप बोलने वाले हो उसकी बेसिक आउटलाइन रहनी चाहिए आपके माइंड में. ठीक है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, आपने कौन सा स्पोर्ट्स खेला है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स है. ऑन द स्पॉट अगर आप वहां बैठ के सोचने लगोगे ना, कुछ भी याद नहीं आएगा. आप लोग लाइफ में कुछ करा ही नहीं है यार. नो, even the like small achievements of your life are also very important and holds a good weightage in your SSB. Okay, now next is eliminate the fear of unknown. Definitely there will be some questions which you have not heard before. Okay, maybe which you have not prepared for, but don't get stressed अगर कुछ ऐसा unknown type आ रहा है तो. Okay, as much as possible try eliminating things that make you nervous. ठीक है, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली फ्रॉम योर PIQ फॉर्म. Prepare each and every column in a very good manner. Okay, also keep all pre-requisite information from the kind of dress you have to wear at the time of interview to retaining what you have written in the PIQ form. Just be sure. Okay, जितनी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपेयर करो. जो अननोन क्वेश्चंस भी फिर भी आ रहे हैं, एक तो गिव इट अ थॉट, है ना, 2 सेकंड 4 सेकंड लेके ध्यान से क्वेश्चन को सुन के उसका आंसर करो. एंड इन केस यू डोंट नो, please confidently tell that sorry sir I don't know, instead of making a vague guess and like outshining your previous performance. Okay, now relax while waiting outside. ठीक है, don't be tense कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा. सबको डर लगता है इंटरव्यू से पहले, है ना. everybody is anxious, everybody is having stress, so everybody have these things in mind कि यार मेरा अच्छा नहीं गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह. but you have to learn this art of making yourself relaxed. Okay, so while you are seated outside waiting for your turn, allow yourself plenty of time to gather your thoughts, breathe and center yourself. Positive mind rakho, recall things which makes you happy. Okay, go with the positive attitude inside. Now think positively and be confident. Like I said, prior to the interview, visualize yourself doing a great job answering the questions satisfactorily and clearly and impressing the IU. Try to maintain a natural smile. Remember, you are asked to come in for the interview for a reason. अगर आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल समझा गया है because you have something in you. Otherwise, many people out there are waiting just for one chance to appear for the interview, but they're not getting it. So you have it, own it. Okay, except from that, also recall your achievements. Okay, if you will recall your achievements now, it will be like I have done so much in my life, I can do this as well. So that will also boost up your confidence to another level. Okay, then think friend not foe. Okay, always remember the interviewing officer is not your enemy. Okay, he don't have any personal grudge to you. Even if he is shouting at you, even if he is talking in a very rude manner to you, even he is telling you to go out of the room, कुछ भी है, ठीक है, वो कैसा भी आपके साथ बिहेव करे, always remember those are nothing, just the pressure tactics. Okay, he don't have any personal grudge, he don't even know you personally. किसी भी बात से आपसे कोई टाइप की दुश्मनी उनकी नहीं है. ठीक है, so the interviewing officer may not be your friend, right, but he is definitely not your enemy. He is there to recommend you only. Just show your qualities ना. Okay, वो आपको recommend करने के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे. Don't think him as hostile or the enemy. Remember that he wants to learn about you to see if you're right for the armed forces or not. उनका personal gain नहीं है. If you find you are fit for the job,
डेफिनेटली ही विल कंसीडर. ओके, बट अगर आप सोचोगे कि यार वो दुश्मन है, उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, उन्होंने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वट एवर. So if you take these things into your head, definitely it is going to impact your performance in a very bad manner. Okay. Now sit up straight and don't fidget. Okay. Your non-verbal gestures also play a very vital role in your SSB. Right. So always keep in mind that however you are presenting yourself, be a very confident person. When you square your shoulders and sit up straight, your voice naturally projects better and in flow than if you are hunched over. Okay. तो झुक के बैठना, इधर उधर मुड़ के बैठना, रिलैक्स होके था, नो, sit straight in front of your assessor. Okay, you will also have an appearance of confidence even if you are trembling on the inside. Okay, जब आप सीधे बैठे हो ना, straight upright manner में, you will definitely project confidence. चाहे अंदर से आप anxious हो, no matter, but आपका confidence पक्का पक्का project होगा. And also you know that defense is all about this discipline. So be disciplined inside the SSB center. Then normalize. Okay, don't stress about the fact that you are stressed or anxious. ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है यार, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यार, मैं कैसे बोलूंगा यार, मुझे नहीं आया. डोंट ओवर थिंक. ओके, अगर हो भी रहा है तो नॉर्मलाइज इट. इट्स ओके टू गेट अ लिटिल बिट स्ट्रेस, टू गेट a bit of anxiety or be anxious. It's very much normal. Okay, we all experience stress to a degree. Just dial that anxiety down so it doesn't get in the way of you being the perfect or the best. Okay, anxious होना, थोड़ा सा चिंता करना कि क्या होगा कैसा होगा, that's normal, but don't let it affect your mental ability to such a level that you're not able to perform. Okay, now focus on your strengths and purpose. Stress has a way to make the best of us feel like unqualified losers. है ना, जब हम स्ट्रेस में होते तो हमें लगता है कि यार मेरे कुछ बस की नहीं लाइफ में, है ना, एंड आई कैन नॉट डू इट. सो दिस थिंग शुड नेवर कम टू योर माइंड, एंड टू ओवरकम दिस यू आर देयर फॉर अ पर्पस. ऑलवेज रिमेंबर दैट. आप वहां पे टाइम पास करने, घूमने फिरने, ट्रिप करने नहीं गए हो, राइट? देयर यू हैव गॉन फॉर पर्पस. रिमाइंड योरसेल्फ दैट पर्पस. आस्क योरसेल्फ, इफ यू वर टू बी रिकमेंडेड फॉर दिस सर्विस, व्हाट आर द रीजंस व्हाई. आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व करते हो सर्विस में रहना. Nothing burns through panic like purpose. Okay, when you talk or think about your purpose, your stress, your fears will definitely go out. Okay, then breathe and take your time. Okay, always लॉन्ग ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग हेल्प्स. ओके, अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी, काम योरसेल्फ डाउन, है ना, take 2-3 long deep breaths and you will be okay. Okay, when you are stressed or nervous, you tend to take quick shallow breaths. Okay, avoid that, है ना. Take deep and full breath and relax. That will also take your tension away, right? So take time to formulate your thoughts that allow you to provide a well thought out answer. ठीक है, सोच के बोलना है, कोई इशू नहीं है उसमें. When you are relaxed, you think more clearly and your answers will be comparatively better. Okay, now accept the fact that mistakes will happen. That's very much okay to accept कि हाँ यार गलतियां हो सकती हैं, या कुछ आपने गलत बोल दिया बाय चांस. You can definitely say sorry and correct yourself. Okay, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो. वो आपके असेसर भी बहुत आराम से, he will be chilled out, he will be relaxed. Okay, so this service employs you not for being perfect, है ना. आपको वहां नहीं देख रहे कि आप ऑफिसर हो तो आपको ले लेंगे, है ना. ऑफिसर होते और आपको ले लेते तो ट्रेनिंग थोड़ी करा रहे होते, डायरेक्ट भेज देते थे बॉर्डर पे, राइट. सो they are checking whether you are flexible and resilient or not, whether you have the qualities to be trained and turned into an officer, right? So definitely you cannot be perfect, but show that trait that yes, I am having that power of improvement or that sense of improvement in myself. Okay, don't be okay with your mistakes, always think of improvement. Now take the pressure grip off you and behave naturally. We all are humans, that's very much okay. Relax, converse like you are conversing normally with people. Okay, don't take it as a very like big interview which can make you under stress. Okay, so these were the 12 ways through which you can keep yourself calm, and definitely these are going to help you. These are tried and tested tips
which I am telling you here, and definitely as it worked for me, it will definitely going to work for you. All the very best. And also, if you're preparing and having your SSB in the upcoming times, you can definitely enroll for our SSB online course at our website or even our application SSB Crack Exams. There you will find entire 5-day process along with the live classes and 24/7 mentoring sessions. You can also enroll for other courses for your written examinations, be it your NDA, CDS, AFCAT or any other examination. We do have the separate test series as well. You can enroll for them as well. Also, you can apply the code Warrior10 for extra 10% discount on all the courses and test series, and rest all the very best, guys. Prepare well, perform well, get recommended soon, be the officers and serve our motherland. Bye bye, take care and Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।